So, dear all, welcome to Yuvam Knowledge Sharing Series. Yuvam is a science-based lifestyle modification platform where we offer people a one-stop solution for most of their lifestyle disorders, such as obesity, fatty liver, diabetes, hypertension, hypothyroidism, PCOD, and erectile dysfunction. We also promise that the members, once they adopt the protocols, and they will be not be having heart attack or cancer going forward. And these are not tall claims, but assurances given after years of hard research in the field of health and nutrition. So now, through a knowledge sharing series, we are trying to communicate with you in a language which is easy to comprehend with regards to lifestyle disorders. And today's session in particular is with regards to why people are not able to reduce weight and what is the solution. So in order to understand the underlying concepts much better, I request you all to watch our other YouTube videos which we have posted and which would be, continue to post, since they're all interrelated, where some concepts are covered more in detail in the other videos. So in this session, I'm joined by my colleague Sunil Jatalia, who's the head of research at Yuvam. And the session is expected to last about 1 to 1.5 hours, where in the first 30 minutes, I'll be explaining you the underlying concepts. Now, this would be followed by an open question answer session where Sunil sir and we will answer the questions posted on the forum, and both of us would be conducting the sessions together. I'll be conducting the first part, and the second part would be led by Sunil sir. This session would be recorded and it would be posted on YouTube. Okay, so let's start. So how are we going to basically cover the session? The session would be covered under the following heads. We'll be talking about what is the definition and classification of obesity, which is the fat part of it, and why people are not able to lose weight. Going forward, we'll also discuss the complications of excess fat, which has accumulated, certain myths versus facts, which generally, we believe कि ऐसा होता है, ऐसा मानते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है is what we'll be discussing. And then lastly, we'll cover the aspect that how Yuvam, it can help you in ensuring that you will never gain weight ever. Okay. So now let's come to the definition of obesity. Now, obesity is basically defined as a medical condition and is also sometimes considered as a disease in which excess body fat is accumulated to an extent that it may negatively affect health. That's the plain simple way of understanding obesity. So excess body fat की बात हो रही है और उस extent की बात हो रही है कि वो इतना excess में है कि it would start affecting us negatively. The estimates as far as the National Family Health Survey number 5, which was conducted from 2019 to 21, it states that approximately 32 crore people are obese in India, and which is a huge number. Also, some symptoms, they talk about increased fat storage, and typically one can literally, pick up their stomach and hold it in their hands, and they will, find that, yes, there is a lot of fat storage, which is there. So what is the diagnostic method available? Plain and simple, if you have a body mass index which is greater than 25 kg per meter square, a person is supposed to be overweight and obese. The causes, now there is excessive consumption of energy, that is one cause. And this energy dense foods which are there, they lead, that I would say they are just the starting point. Sedentary lifestyle, lack of access to healthy diet, genetics, leading to insulin resistance. These are the factors which are there, and we'll be discussing कि ये क्यों है और कैसे है. Complications which are associated with the increase in weight. So cardiovascular diseases, type 2 diabetes, obstructive sleep apnea, atherosclerosis, जिसको हम बोलते हैं plaquing of arteries, osteoarthritis, depression. These are all the complications of people who have put on excess fat. Medical advice generally given is that you should change your lifestyle, exercise, eat less. So let us understand, in terms of the BMI part, which we have talked about, कि ये कैसे है और क्या है और क्या classification है. So this is the classification which is there for now for South Asians, और ये classification different है जो कि European या let's say Caucasian race जो है उनके हिसाब से, उनके लिए अलग parameters हैं, हमारे लिए अलग parameters हैं. तो ये जो अलग पैरामीटर्स हैं, ये क्या बता रहे हैं? पहले तो ये बता रहे हैं कि एक अंडरवेट पर्सन का क्या मतलब है और क्या हो सकता है. तो वो बोलता है कि भाई बीएमआई जिसका 18.5 से नीचे हो, वो पर्सन जो है वो अंडरवेट है. और बीएमआई का क्या मतलब है?
इट इज अ बॉडी मास इंडेक्स, कि हमारा कितना वेट है डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ कि हमारी हाइट कितनी है इन मीटर्स, विल गिव अस द बीएमआई। तो कितना लंबा इंसान है और कितना वेट कैरी कर रहा है उसके बेसिस पे ये इंडेक्स को बनाया गया। नॉर्मल वेट किसका हम बोलेंगे? तो नॉर्मल वेट इज दैट 18.5 से 22.9 का। ओवर वेट इज मोर देन 23, और ओवर वेट में भी जो है दे आर थ्री क्लासिफिकेशंस: अ पर्सन हु इज एट रिस्क, पर्सन हु इज ओबीस कैटेगरी 1 एंड हु इज ओबीस कैटेगरी 2। और मेन और वुमेन के लिए जिनकी वेस्ट सरकमफ्रेंस है उसके ऊपर फर्दर डिफरेंशिएशन इसके ऊपर किया गया। सो आई विल नॉट गेट डीप इनटू दैट द एस्पेक्ट रिलेटेड टू द वेस्ट सरकमफ्रेंस, लेकिन हम मोटा मोटा अगर हम ये सोचना चाहें कि अरे यार एक नॉर्मल बंदे का कितना वेट होना चाहिए, फिर अगर ये बीएमआई की बात हो रही है, तो लेट अस से मैं नॉर्मल अपना वेट अगर मैं देखूं हाइट के हिसाब से कि मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, तो मेरे लिए ये वेट कैटेगरी किस तरीके से होनी चाहिए। सो इफ यू सी नाउ that typically I would be underweight if I am less than 54.5 kgs, having a height of 172 centimeters, 5 foot 8 inch. But I would be having a normal weight if I am between 54.5 to 67.5. इसका मतलब है कि अगर मैं 55 किलो का भी अगर हूं तो I would be having a perfect normal weight. But what does it mean? कि अरे बोले कोई बोलेगा अरे यार यू आर लुकिंग सो लीन थिन, और ये तो बहुत तू उस तरीके से लग रहा है कि शायद तू बीमार है। नोट इज नॉट लाइक दैट। नाउ ओवरवेट एट रिस्क कैटेगरी किसकी है? जो कि बिटवीन 67.5 टू 73.5 का वेट। सो एज ऑफ नाउ आई एम हैविंग अ नॉर्मल वेट, माई वेट इज 64 kgs एंड पीपल से कि अरे यू लुक वेरी लीन एंड थिन। Now, even if I have a 70 kgs of weight, which generally people of my height have, so they would be under risk already. Now, people who are having weight more than 73.5, 5 foot 8 inch people, they are already classified as people who are obese. So they should not think कि मैं overweight हूँ। Overweight तो आप हो ही, but you are in the obese category, which has got other complications, which I had, just talked about. Anybody having a weight greater than 88.5 of 5 foot 8 inch is in big problem. So this is the, underlying index जिसको कि आप गेज कर सकते हैं और अपना बीएमआई आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इंटरनेट पे जाके यू कैन चेक कि व्हाट इज इट। So ideally, what would we say at Yuvam? We would say that ki if you have a BMI of 20.7 for your given height, that is an ideal BMI to have. Okay. So now remember that anybody who's having a normal weight in this kind of a thing is the ideal weight or iske beech mein somewhere. So for me, if I'm trying to attain a particular weight, I would say that 63, 64 is going to be a good weight for me. Now, what about those people who are very, very thin? Now, there's another thing which is, perplexing now medical science, is a thing known as thin on the outside and fat on the inside. So all those people who are thin, they should not think that, they are clear in terms of health. So if you have fat which is present at the wrong places, in spite of you being thin, you would be under a lot of problem. So what is that part? So let's say this particular fat वो कहीं और नहीं है, subcutaneous fat is not there, लेकिन इसका accumulation is in the liver or visceral fat. Then that person और जो obese person है उसमें कोई खास difference नहीं है. So approximately it has been found out in a 2012 research study which was carried out that approximately 13% of the people, they were falling under this category of thin on the outside and fat on the inside. So that is also a marker which people should consider. So let us now understand कि ये सब क्या हो रहा है, how things are happening, और क्यों मैं वजन कम नहीं कर पा रहा हूं, या फिर एनर्जी मेटाबॉलिज्म which is related to my glucose consumption and my fat consumption, उससे क्या होता है, और अगर मैं चाहूं तो भी मैं वजन शायद कम क्यों नहीं कर पा रहा हूं. We'll be discussing this part now. So we generally are consuming glucose and fats. Fats I'll cover slightly later. But मान लीजिए हमने ब्रेकफास्ट किया बढ़िया सा, we had chocos and milk and probably bread jam batter, वो हमने लगा के we have added. तो उससे क्या होगा कि
Now glucose, which is produced because of this, it is a carbohydrate rich food. So this is now going to be coming into our bloodstream, और उसको एनर्जी देने के लिए इंसुलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस, जिसका काम है कि उसको पुश करे सेल्स के अंदर, ताकि ये जो है अब ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाए और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो उससे एनर्जी बनाए. दैट इज हाउ थिंग्स वुड हैपन. सो इट विल ओनली हैपन वंस देयर इज इंसुलिन. अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ये ग्लूकोज जो है वो ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाएगा. तो जब इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, तो उसके बाद इंसुलिन उसको सेल के अंदर भेज देता है. अब सेल के अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है, अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, तो वो उसको एनर्जी को प्रोडक्शन उसका करेगी, अदरवाइज वो नहीं करेगी. तो आपने खाया तो मान लीजिए शुगर, एंड देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर वट एवर रीजन, एंड विल टॉक अबाउट कि वो क्या रीजन है. तो उसको जो है वो शुगर की तरह नहीं रहने देगा, उसको लिवर इज गोइंग टू बी कन्वर्टिंग इन इनटू फैट अगेन, और प्रॉब्ली other forms of amino acids. So anything can be converted into everything else. So which means कि ये जो शुगर आपने खाई थी वो एनर्जी में अगर कन्वर्ट नहीं हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनटू फैट, सो दैट द बॉडी कैन स्टोर इट फॉर अ लेटर यूज. लेकिन अगर रिक्वायरमेंट थी तो क्या होता है, तो अगर रिक्वायरमेंट है एनर्जी प्रोड्यूस होने की, देन इज माय बॉडी एबल टू बर्न the let's say the glucose part or the fat part of it? The answer is yes, it would do so, provided it goes past through checkpoints, which is important, जो कि लोगों को नहीं पता इस चीज के बारे में. तो वो चेक पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला चेक पॉइंट है कि अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एंड इट विल फाइंड आउट कि अरे क्या ग्लूकागॉन प्रेजेंट है. नाउ ग्लूकागॉन इज अ हार्मोन जो कि पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है. जैसे कि पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, वैसे पैंक्रियाज ग्लूकागॉन भी प्रोड्यूस करते हैं. अगर ग्लूकागॉन होगा तो जो है हमारा ये साइकिल ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो चालू होगा. नहीं तो वो बोलेगा कि अभी नहीं, अभी तो स्टोरेज का टाइम है, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एनर्जी प्रोड्यूस करने की, वी विल अगेन स्टोर इट. तो वो फिर वापस फैट में कन्वर्ट कर देगा. अब मान लीजिए कि ग्लूकागॉन तो प्रेजेंट था, तो क्या होगा, तो ही जो है हमारा फैट वाला जो मैकेनिज्म है, इट वुड बी ट्रिगर्ड. विच मीन्स कि इफ देयर इज ग्लूकागॉन प्रेजेंट इन माई बॉडी, देन ओनली द फैट इज गोइंग टू बी मेटाबलाइज नाउ. अगर ग्लूकागॉन नहीं है तो फैट जो है वो मेटाबलाइज नहीं हो रहा है. तो फैट क्या है? फैट जो है वो ट्राइग्लिसराइड है, उसमें 3 फैटी एसिड होते हैं, एक ग्लिसरॉल होता है. तो इनफैक्ट अगर आप ये सोचे कि फैटी एसिड्स जो हैं वो फैट से एनर्जी कन्वर्जन हो रही है, लेकिन उसका जो एक पार्ट है ग्लिसरॉल, वो है वो खुद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको कौन कन्वर्ट करता है? लिवर में. तो अगर आपने हमारा पिछला सेशन देखा हो विच वाज रिगार्डिंग डायबिटीज, वेयर वी कवर्ड शुगर एट लेंथ, वी हैड टोल्ड कि शुगर जो है वो एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड है, नेसेसिटी है. 1 टीस्पून फुल ऑफ ग्लूकोज हमारे बॉडी में हमेशा रहना चाहिए. अगर नहीं रहेगा, वी विल गेट इनटू अ हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन विच इज वेरी वेरी बैड फॉर अस. तो मान लीजिए अगर इफ आई एम फास्टिंग फॉर 7 days, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, तो वो शुगर कहाँ से आ रही है, वो ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है हमारे फैट से. सो रेस्ट बी assured that there is glucose always going to be present in the manner it is required by your body, because the part which is glycerol of the fats is going to be converted into glucose, and your homeostasis level of sugar is always going to be maintained. So do not be bothered about that going in future. However, अगर ग्लूकागॉन प्रेजेंट है तो अब एक चांस है कि अब आपका फैट बनना शुरू होगा, बट दैट वुड ऑल्सो टेक अस टू अनदर पॉइंट, वेयर इज द सेकेंड चेक पोस्ट. सो इस चेक पोस्ट में क्या हो रहा है, द बॉडी इज नाउ ट्राइंग टू फाइंड आउट कि अरे इज थायराइड फंक्शन प्रॉपर, विच मीन्स इफ the T3, which is a hormone produced by our thyroid gland, is able to convert into T4, which is the usable form, and which basically entire metabolism का आप ये समझिए कि एक चाबी हमारे थायराइड हार्मोन T4 के पास भी है. जब तक वो एडिक्वेटली नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, तब तक जो है हमारा अभी भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ है. सो ऑल दोज पीपल
हु आर हैविंग हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि T3 से T4 का कन्वर्जन ठीक से नहीं होता है, they may be exercising 6 hours in a day like mad, they would not be able to reduce fat efficiently. So हमें ये भी देखना है कि all those people who are having hypothyroidism as a problem, so उनके लिए ये सब चीजें होना मुश्किल है। लेकिन क्या हाइपोथायराइडिज्म को हम रिवर्स कर सकते हैं? आंसर इज यस। सो ओके, सो लेट्स सी कि अगर T3 to T4 conversion was proper, then how it is happening. That is the only way now the energy would be burned by the mitochondria present in our cells, who would be very, very efficient in doing it. So अब हमने चाहे ग्लूकोज लिया और उसके बाद हमने देखा कि हाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, ग्लूकोगॉन का प्रोडक्शन हो रहा था, तो हमारा फैट बर्निंग भी चालू हो गया एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग फाइन। But it is not the way it happens. So what if this first checkpoint, जिसमें कि ग्लूकोगॉन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है? और ऐसा क्या हो सकता है कि ग्लूकोगॉन का प्रोडक्शन हो ही ना रहा हो? द आंसर इज यस, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि देर इज लॉट ऑफ इंसुलिन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी फॉर अप्रोक्सीमेटली 18 आवर्स अ डे। तो इसका मतलब है कि 18 घंटे आपकी बॉडी में इंसुलिन है, और जब तक इंसुलिन रहेगा आपकी बॉडी में तब तक ग्लूकोगॉन का प्रोडक्शन नहीं होगा। इट्स लाइक इफ देर इज इंसुलिन प्रेजेंट, glucagon production by the pancreas would not be carried out. Only in the absence of insulin this hormone would be released. लेकिन ऐसा क्यों है कि ये 18 घंटे तक हमारी बहुत से लोगों की बॉडी में प्रेजेंट है? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। फर्स्टली वी आर हैविंग अ कार्ब रिच डाइट, एंड सेकेंडली वी आर हैविंग इट आफ्टर एवरी 2 to 3 hours। टिपिकली लोग जो हैं वो दिन में 7 से 8 घंटे तक खा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में। कभी किसी ने कोई बिस्किट खा लिया, कभी किसी ने कुछ फ्रूट खा लिया, कभी कुछ ले लिया। एक बार जब बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है वो कम से कम 4 घंटे आपकी बॉडी के अंदर रहता है, और अगर आप हर 2-2 घंटे में कुछ खा रहे हैं तो इंसुलिन जो है वो नीचे नहीं आ रहा, वो बार बार प्रोड्यूस होता जा रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ? देयर इज नो ग्लूकागॉन प्रोडक्शन विच इज हैपनिंग। तो आप पहले चेक पॉइंट से ही आगे नहीं गए। अगर आप आगे नहीं गए तो क्या हुआ कि जिस तरीके से नॉर्मल एनर्जी मेटाबॉलिज्म होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। आप चाहे शुगर ले रहे हो, चाहे फैट खा रहे हो, अल्टीमेटली वो फैट में ही स्टोर हो रहा है। सो ये बात जो है वो लोगों को ध्यान में नहीं है, और उनको पता भी नहीं है कि क्या उनकी बॉडी में इतना इंसुलिन पहले से है या नहीं है। कैन वी फाइंड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट आउट? यस, बाय अ मेयर सिंपल ब्लड टेस्ट। नाउ इट ऑल्सो कॉम्प्लिकेट्स फर्दर। अगर ये इंसुलिन हमारी बॉडी में इतना रहता है तकरीबन रोज, तो हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, और अगर वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है तो बॉडी और ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती रहती है। तो इससे क्या होता है? अब मान लीजिए मैंने चाय पी और मेरी बॉडी में एक्स अमाउंट ऑफ जो है इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जो पर्सन इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया है और उसको पता ही नहीं है, उसने जो है 1 कप चाय पी और उसके जो है 10x इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ। सो दिस वन चाय कप ऑफ टी इज बिहेविंग वेरी वेरी डिफरेंटली, for you and me. For a person who's insulin resistant, for a person who's insulin sensitive, there is a huge difference. तो उनके लिए 1 कप चाय भी जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि इतना इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वजह से ग्लूकागॉन तो वैसे भी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। सो दैट इज वन थिंग विच दिस पीपल शुड अंडरस्टैंड। लेकिन अगर ऐसी बात है तो इससे क्या हो रहा है? तो हुआ ये कि जब इंसुलिन बहुत ज्यादा आने लग गया तो हमारा ये पाथवे ही ब्लॉक हो गया, जिसमें कि अब ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, लेकिन अब मुझे वजन कम करना है। अब मैं कैसे करूंगा? तो मेरे पास सिर्फ एक ही चारा रह गया, विच इज अ ब्रूट फोर्स मैकेनिज्म, विच इज एक्सरसाइज। देयर इज नथिंग एल्स। जब तक मैं एक्सरसाइज करूंगा तभी मैं ये बाय ब्रूट फोर्स मैकेनिज्म आई वुड बी एबल टू बर्न फैट, अदरवाइज आई वुड नॉट बी एबल टू डू इट एनी विच वे। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जब आप लोग जिम जाते हैं और जब तक जा रहे हैं, जब तक एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपने वजन पे कुछ काबू रख सकते हैं। जिस दिन आप नहीं जाएंगे, अगेन आपने इस ब्रूट फोर्स मैकेनिज्म को भी जो है आप नहीं यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब सिर्फ फैट, वापस वही साइकिल शुरू हो गया, एंड यू वुड कंटिन्यू टू अकुमुलेट फैट इन योर बॉडी।
अब हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अगर हम ये ब्रूट फोर्स को हटा दें तो क्या हम जो है अपने फैट को नेचुरली बर्न कर सकते हैं। आंसर इज यस। विच मीन्स कि ये जो दोनों पाथवे हैं इनको हमें खोलना पड़ेगा। अगर हमने पहला पाथवे ये इंश्योर कर लिया कि हमारी बॉडी में ग्लूकागॉन प्रेजेंट है तो यस, आई वुड बी एबल टू बर्न। दूसरा पाथवे हमें ये देखना है कि माई थायराइड फंक्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये दोनों पाथवे जब यस हो जाएंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको एक्सरसाइज करने की भी रिक्वायरमेंट ना रहे। इवन विद अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल यू विल बी एबल टू मेंटेन योर वेट। लेकिन क्या ऐसा ही होना चाहिए? नो। एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अदर रीजंस। वो किन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है? वो हमारे गेट को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंटेन करने के लिए, हमारे मसल मास को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एवरी अदर रीजन एक्सेप्ट लेट्स से व्हाई वी आर गोइंग इन द फर्स्ट प्लेस, कि हमें सिर्फ अपने वजन की चिंता है। तो वजन की चिंता, जिम जाके आपका वजन तभी तक कम हो सकता है अगर आपके दोनों पाथवे ब्लॉक हैं। तो अगर हम ये दोनों पाथवेज को खोल देते हैं, रेस्ट बी अश्योर्ड दैट यू कैन लिव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड यू विल स्टिल नॉट बी पुटिंग ऑन वेट, बट स्टिल दैट वुड नॉट बी अ गुड चॉइस टू मेक। ओके, सो लेट्स सी अनदर थिंग। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ऑल दोज पीपल हु बीन रेगुलरली कंज्यूमिंग समथिंग और द अदर थ्रू आउट द डे, दे आर नाउ गेटिंग इनटू अ नेगेटिव साइकिल, एंड दैट नेगेटिव साइकिल आई जस्ट ट्राई टू शो आउट हियर। ये नेगेटिव साइकिल क्या है? कि मैंने कुछ खाया, कार्ब रिच फूड, इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ और ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, और इतना प्रोड्यूस हुआ कि उसने बचा कुचा शुगर लेवल को भी नीचे कर दिया। जब उसने बिल्कुल नीचे कर दिया तो बॉडी फील्स कि अरे ये तो एनर्जी की कमी है। तो फिर एक हमें ऐसा क्रेविंग होती है, भूख लगती है कि यार अब तो कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे एनर्जी लेवल्स कम हो रहे हैं। सो पर्सन इज गेटिंग इनटू हाइपोग्लाइसेमिक जोन बिकॉज लॉट ऑफ इंसुलिन हैज बीन प्रोड्यूस्ड, और वो उसको जो है बेसिकली शुगर लेवल्स को कम कर रहा है, जिसकी वजह से आप फिर खा रहे हैं और उस पर्टिकुलर जोन में घूमते जा रहे हैं। तो अब एक नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाता है कि मुझे बार बार खाना है और बार बार खाना है। तो अगेन ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रॉब्ली इट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द थायराइड फंक्शन ऑल्सो। तो मैं नेचुरली फैट को बर्न नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक ऑप्टिमाइज जोन के अंदर रहेंगे तो एवरीथिंग वुड हैपन नेचुरली, और इस टाइप की क्रेविंग्स और ये टाइप की फीलिंग नहीं आएगी। फ्रॉम दिस नेगेटिव साइकिल यू कैन जस्ट ensure that you get into a positive cycle, and if you do that you'll be able to maintain your weight forever. ओके, सो अगर इंसुलिन का इससे काफी कुछ लेना देना है तो लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या कोई स्टडी हुई थी पहले। सो स्टडी वाज कंडक्टेड इन 1974 एंड इट वाज फॉलोड थ्रू द 1990s, जिसमें कि हमने ये देखा कि खाने से इंसुलिन रिस्पॉन्स का क्या लेना देना है और वो कैसे इफेक्ट हो रहा है। नाउ दिस पर्टिकुलर स्टडी वाज अगेन रिव्यूड in 2016 and it showed that कि हमारे इंसुलिन का हमारे खाने पीने से क्या लेना देना है। so over a time people नहीं so over a time people were able to through the study it was found out that कि जो लोग बार बार खा रहे हैं उनके इंसुलिन लेवल्स आर गोइंग वेरी वेरी हाई, और अगर इंसुलिन लेवल हाई जा रहा है तो इट इज लीडिंग टू अ सिचुएशन जिसमें कि इन 1970s दे केम अप विद अ टर्म नोन एज डायबिटीज इन C2। तो जिसके इंसुलिन लेवल्स वर हाई, जिनको हम इंसुलिन रेजिस्टेंट या हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं, उनको 1970s में उन लोगों को डायबिटीज इन C2 बोला जाता था, कि इनको तो एक तरीके से डायबिटीज हो ही चुका है। दैट टर्म इज नो लॉन्गर यूज एंड वी यूज टर्म्स लाइक प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज विच आर स्टेजेस एट अ वेरी वेरी लेट स्टेज वाली बात है वो। सो पहले जब हम टू मच शुगर we are having and we are having it too often, it leads to hyperinsulinemia, which leads to fatty liver and obesity. Going forward, it leads to a thing known as hyperglycemia, which is diabetes. So even at the level of hyperinsulinemia, we are at a stage ki jahan pe we would not be able to burn fat at all. Okay. So what other problems, this particular thing is creating? So let's say I'm having excess of sugar. Now sugar is comprised of two parts, which is glucose and fructose. So, and they have got two different mechanisms. तो अगर मैं मोटा हो रहा हूं और मैं नहीं पतला हो पा रहा हूं तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस आगे हो सकते हैं। सो वन इज दैट आई बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट, जो हमने बात करी थी, जिसमें कि रिड्यूस ग्लूकागॉन प्रोडक्शन है, जो कि रिड्यूस फैट बर्निंग है, एंड इट फर्दर लीड्स टू ओबेसिटी। दिस इज व्हाट वी नो एज ऑफ नाउ, जो हमने डिस्कस किया।
इसके अलावा जो है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑल्सो लीड्स टू डायबिटीज. Now, people can go and watch this video, which is already uploaded as far as diabetes is concerned. They will gain more information there. Now, insulin resistance also leads to hypertension, high blood pressure. ये भी हमने वीडियो पोस्ट किया हुआ है. So people who want to have more in-depth knowledge about that particular thing can also go and look into that particular video which we have posted. Excess glucose also leads to coronary kidney disease. Oh, sorry. Yeah, which is related to, it's basically chronic kidney disease, wrongly mentioned out here. And so there is an impact on kidneys also because of this. Now, with respect to fructose, what is happening is, which is the other part of the sugar. Now, this is leading to triglycerides formation by the liver. तो जितना फ्रक्टोज का जो लोड है, जो कि हमारी बॉडी का कोई और सेल हैंडल नहीं कर पाता, इट कम्स टू लिवर, और लिवर के पास कोई चारा नहीं है either to convert it into glycogen or store it as a fat. तो बार बार ये करते हुए क्या हो रहा है कि हमारा लिवर भी जो है फैटी हो रहा है. इसलिए आप देख रहे हैं कि आजकल लोग, इवन इफ दे आर नॉट कंज्यूमिंग टू मच अल्कोहल, दे हैव फैटी लिवर्स. और अब उनके लिए एक नई टर्म निकाल दी गई है, MAFLD, मेटाबॉलिकली रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज. ठीक है. Excess fructose is also, causing advanced glycation end products, which is leading to atherosclerosis and heart attack. हमने हार्ट अटैक का सीरीज लास्ट टाइम किया था, एंड वी हैव नॉट येट पोस्टेड दैट वीडियो ऑन YouTube. We will post it in a day or two. Okay. So let's, I'll give you just glimpse of the fat cells. And I think fat cells का हम एक अलग से, we will have a knowledge sharing session because it is a different animal altogether. Or, a very, very interesting thing to basically look forward to as a subject. But मोटा मोटा मैं आपको अभी ये बताना चाहता हूँ कि फैट सेल्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं व्हाइट फैट सेल्स और एक होते हैं ब्राउन फैट सेल्स. जिन फैट सेल्स के बारे में आप लोग ज्यादातर जानते हैं वो हैं व्हाइट फैट सेल्स, जिनका काम है फैट को स्टोर करना. आई वुड थिंक दैट कि मोर देन 90-95% पीपल डोंट इवन नो कि एक और टाइप का फैट सेल होता है जिसको बोलते हैं ब्राउन फैट सेल्स, जिसका काम है फैट बर्न करना थ्रू अ प्रोसेस नोन एज थर्मोजेनेसिस. तो ये किस टाइप का फैट है जो कि स्टोर नहीं कर रहा है, लेकिन फैट सेल जो कि बर्न कर रहा है. और ऐसा वो क्यों कर रहा है? ऐसा वो इसलिए कर रहा है कि उसके पास जो है ज्यादा मैकेनिज्म है टू क्रिएट एनर्जी, विच इज मोर माइटोकॉन्ड्रियाज. तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने व्हाइट फैट सेल्स को ब्राउन फैट सेल्स में कन्वर्ट कर सकें और बैठे बैठे एनर्जी जो है वो बर्न करते रहें? आंसर इज यस. ये कैसे होगा? वो वैसे होगा, पीपल हु गोइंग टू बी जॉइनिंग द यूएम प्रोग्राम विल टेल दिस सीक्रेट. हाउएवर, लेकिन आप उन लोगों को जरूर जानते हैं, ऐसे लोग कि वो खाते रहते हैं, लेकिन आप बोलते हो यार ये खाने के बाद भी ये बंदा पतला का पतला ही दिखता है, इसका तो कुछ नहीं होता, इसको कोई लगता ही नहीं है. और हम तो हवा भी यू नो जोर से सांस ले ले तो हम मोटे हो जाते हैं. सो दिस इज रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म पार्ट ऑफ इट, which is wherein brown fat cells also play a part. So now there has been a study which was done in 2015 and was published कि BAT, which is the brown adipose tissue or the brown fat cells, उनका activation, it increases the energy expenditure and it decreases plasma triglyceride and cholesterol levels also. Now बहुत से लोगों को ये बोला जाता है कि यार फैट कम खाओगे तो आप मोटे नहीं होगे, और ये आई वुड से इट इज जस्ट अ मिथ altogether. Outrightly rejected this concept. और ये आज से नहीं, I just highlighted the earlier studies. 1950s में स्टडी हुई थी, तब से पता है ये बात. और अब तो बहुत स्टडीज हो चुकी हैं इसके ऊपर, which I'll cover probably some in some other session. But all I want to tell you is even in 1957 it was known to us that a diet which is high in protein, fat and low in carbohydrate helps people to reduce weight. लेकिन हमने क्या किया, हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन उससे थोड़ा कम है, और आज की तारीख में तो फैट इज नेग्लिजिबल. जबकि ये बात हमें बहुत पहले पता थी कि ऐसा नहीं होता है. इनफैक्ट इट हैड गॉन अहेड एंड दिस पर्टिकुलर स्टडी विच वाज कैरिड आउट बाय वेस्टर्न शिकागो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक्स
उन्होंने 12 साल का प्रोस्पेक्टिव स्टडी किया था जिसमें उन्होंने 3,000 लोगों को देखा था कि देयर वाज को नो कोरिलेशन बिटवीन डाइटरी फैट एंड पर्सन हैविंग अ हार्ट अटैक। तो ये चीजें जो हैं एज पर साइंस, somebody telling you something and there would be some other study coming up is really very different, and person literally has to go through tons of material to find out कि सच क्या है। तो सच ये है कि people in Yuvam who are undertaking our protocols, we have not stopped them to have fat at all. Yes, we have told them which fat to have. Anything which is edible, hydrogenated vegetable oil produced by man is not supposed to be had at all. You can have desi ghee, we don't have a problem, and people, we tell them कि जितना खा सकते हो खाओ, कोई problem नहीं है. For other reasons also, which we'll be covering. So this particular aspect, हमें ये बोला जाता है कि भाई कैलोरी इन कैलोरी आउट, जितनी कैलोरी करोगे उसको काउंट करो और उतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर लो। जाके आपने एक समोसा खा लिया है, इट इज इक्वल टू 100 कैलोरीज। आप जाके आधे घंटे वॉक करके आ जाओ, यूल बी एबल टू डाइजेस्ट दैट समोसा एंड यू आर फाइन। जितना खाया उतना निकाल दिया, मेरा वजन वैसा का वैसा। बट नो, इट इज नॉट लाइक दैट। यू नो the other aspects which we have talked about, the two other checkpoints, they also play a major role, I would say, in maintaining the balance. तो अगर आपका hormonal imbalance है, which is insulin is being produced more than it is required, अगर आप hypothyroidism में चले गए हैं, उसके metabolic adaptations, कुछ medications आपने ऐसे ले ली हैं which react, there are certain genetic dispositions which are there, because of which, in spite of people who've been put on a strict diet, would not be able to reduce fat from their bodies. And there have been studies quoted, and we have listed out these studies in the presentation. People can go and look them up at their own free time. Now, this concept of calorie in, calorie out, से और भी बहुत problem हो रही है. People have taken it to the next level of starvation also, wherein they just don't want to eat, which is creating another negative cycle where they're not getting the adequate nutrients, and it is creating a problem for them. So hence, calorie in is not equal to calorie out. If you reduce your calories in terms of nutrients part of it, you would land yourself into bigger problem and you will still continue to gain weight. The other aspect that कि हमें कम से कम जो है वो फैट खाना चाहिए, ताकि हमारे को बहुत प्रॉब्लम्स ना हो, हमारे को भी हार्ट अटैक ना आए, और हम फैट नहीं खाएंगे तो हम मोटे नहीं होंगे. It's a totally, I would say, a wrong thing to firstly say and a wrong thing to adopt. Why? Because fats are very, very essential. जितने भी आपके फैट soluble vitamins हैं, वो आपकी बॉडी में तभी अब्जॉर्ब हो सकते हैं जब आपकी बॉडी में फैट प्रेजेंट हो. 90% इंडियंस आर टुडे डेफिशिएंट ऑफ विटामिन डी, क्योंकि कोई फैट खा ही नहीं रहा है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है. सो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस एस्पेक्ट कि ये फैट से ये इशू हो रहे हैं. फैट खाने से मोटे नहीं हो रहे. फैट इज जस्ट स्टोरिंग द एनर्जी, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग. डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग फैट फॉर नथिंग. Now people who have stopped eating fats are eating other things, which is more carbohydrate, which we have just talked about कि कैसे insulin resistance and all these things are triggering up. So fat is essential and people should understand this aspect कि आपको fat खाना है, कौन सा खाना है is the only thing which you need to know. So fats are typically essential for life. Do not debunk them just because somebody else has told you. Now, if you want to live a obesity-free life, how probably Yuvam can help. So at Yuvam, we generally, if you want to do it independent of Yuvam, these are the things, 5 things which you can do and, ensure that you don't have any such problems. So one is you can scrap the junk food. So if you're not consuming ultra processed and processed food, you'll be regulating a lot of simple carb getting into your body, which will help in the format that not much insulin is going to be produced. If you eat less often, if you're, let's say, eating only once or twice a day, it is going to help you a lot, because that is the time your body would be getting a lot of time to burn fat automatically without you going to the gym. You can increase fiber in your diet. This will help in pre and postbiotics which are there, and help your gut microbiome, which will also regulate insulin to a large extent. You can try fasting.
There is a session which we had done earlier. Please go to the YouTube and look up on that particular aspect of fasting, the session which we have covered earlier. Immense benefits which are there. और हमारे वैदिक culture में तो शुरू से fasting has been an you know a part of our culture and it's supposed to be. और किसी न किसी बहाने से पूरे हफ्ते में कोई ना कोई देवी देवता आपको आपके अपने इष्ट देव मिल ही जाएंगे जिसमें कि अंदर की आप उनके नाम पे ही रख सकते हैं and derive the benefits out of it. Sleeping better. If you sleep better, you'll be able to regulate a lot of things as far as your hormones and other enzymes production is concerned. Now, what are the other things which you can ensure? You don't have to starve yourself, which we talked about. कि nutrient rich diet होनी चाहिए, nutrient deficient diet नहीं होना चाहिए. You should not be drinking too much of alcohol. Little bit is okay. Do not expect a quick fix. This is a problem जिसमें कि हमें आपके अगर 2 चेक पॉइंट्स के ऊपर काम करना है तो इट्स नॉट अ क्विक फिक्स. फिर तो आप सिर्फ जिम जा सकते हैं. दैट इज अ क्विक फिक्स फॉर यू. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि युवम का प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं जिनका ऐसी स्टेज आई है कि वो बोलते हैं कि अब तो जिम जाने से भी वजन 100 ग्राम भी कम नहीं होता है और जिस दिन जाना बंद कर देते हैं तो वो बढ़ता बहुत तेजी से. So we will have to unlock those 2 checkpoints to ensure that things happen, and that takes some amount of time. And you should not be comparing yourself with others. You'll be comparing yourself with if you're able to follow the protocols अच्छी तरीके से and with respect to time कि अच्छा मुझे इतना टाइम बोला था तो क्या मैं इतने टाइम में जो है I would be able to reverse all these problems. So how Yuvam is going to help you in doing this? So firstly, it is a program about total health, and this is a lifestyle issue which can be only corrected by making changes in your lifestyle and nothing else. और जब हम वो करेंगे तो सिर्फ ये नहीं कि आपका फैट रिड्यूस हो रहा है. वी आर अनलॉकिंग दोज चेक पॉइंट्स. 2 चेक पॉइंट्स तो हम अभी बात करिए कि ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन होगा naturally in your body. People who got into the aspect of having hypothyroidism, that is also going to be reversed. So there are other benefits which would be there. People who have diabetes, hypertension, that would be cured. Alongside, if we pick up one problem, we are not here to solve one. We are here to solve all problems which pertain to lifestyle disorders. So that is what we are doing. So we are targeting the root cause of the problems, जो कि शायद आपकी पहले you have already acquired or you're on a fast pace of acquiring one going into the future. With respect to this particular Yuvam program, if specifically for people who want to reduce weight, what is the aim? Firstly is to bring your blood biomarkers to a near optimal range and also to reduce weight to normal levels. जो हमने बात करी थी कि normal weight क्या होना चाहिए, that is the aim. सिर्फ मेरा 5 किलो या 4 किलो कम हो जाए, that may not be adequate enough because there are other things at stake जो कि जिसकी हमने बात करी थी. We would be able to restore metabolic health, which means we would be ensuring that you become metabolically flexible and now going forward are able to switch at will between glucose and fat. तो body would be able to recognize that. जब उसको fat burn करने की requirement होगी वो अपने आप fat burn करेगी. And you probably don't even have to exercise, doing that for this particular purpose. So what is expected out of you? Your commitment to adhere to the plan, nothing else. And how long it will take? It may take 6 to 12 months, depending upon what is the physical or the mental or the health as such overall of a person, जिसके basis पे वो timeline decide होती है. So this is all I had as far as this particular session is concerned, and I would request that you can probably help others in joining these sessions at a later stage. You can probably talk about Yuvam.1. We are trying to ensure that simple science is explained in simple terms. There is no complication in whatever I had explained. That was the endeavor. अगर आपको फिर भी इसमें अगर कुछ complicated लगा है, so we are now willing to answer your questions, and this is all we had for you as far as people having excess fat is concerned. I, along with Sunil sir, will be answering your questions now. I had a question. Okay, so Shubhamri this side. Yeah, hi, Shutambri. You said that we are not supposed to take hydrogenated oils, right? Fats, Yes. right? Vegetable oils and any other things. At the same time, we also say that we are not supposed to take milk and milk products.
And ghee is a product of, milk and milk product, right? It's a milk Okay. product. Okay. So how So, do you justify this? firstly, Ghee we've is never exactly made different. this. Yeah, yeah, we've never made this statement that one should not be having milk and milk products. We have ghee, which is produced out of milk or animal fat, is very very good for us. So there is a distinction Hmm. between milk and milk products. Yeah, it's not that they are one and the same. So curd has got other benefits which help us heal our gut microbiome. Ghee, which is Okay. desi ghee, which is, let's say, produced out of cows or buffalo's milk, is just simple fat. It is basically उसका कोई लेना देना ही नहीं है. It is just energy, nothing else. Hmm. और यू कैन हैव इट एट विल. नाउ जो हम बातें करते हैं कि ये हाइड्रोजनेटेड जो एडिबल ऑयल्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं, और अदर ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स जो मैन इज प्रोड्यूसिंग by processing certain things, they are not good. And they are not good for a reason because once you heat them, their smoking point is less. जब आप उसको हीट कर देते हो, they get converted into trans fats. ये जो सैचुरेटेड फैट है, इसमें तो कोई इट्स सच अ सिंपल फैट. ना वो बुरा है ना वो अच्छा है, वो सिर्फ फैट है. But this particular saturated fat is not essential fat. There are certain essential fats which are required by our body, और वो हमारे को बाहर से लेने पड़ते हैं. और हमें अगर बाहर से लेने पड़ते हैं, तो वो किस फॉर्म में हमें मिल सकते हैं? वो हमें मिल सकते हैं थ्रू नट्स एंड सीड्स. वो हमें मिल सकते हैं थ्रू दी एडिबल ऑयल्स विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड. लेकिन जो नट्स एंड सीड से जो हमें मिल रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ट्रांस फैट्स. लेकिन जो हम ऑयल्स बाहर से यूज करते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रांस फैट्स. और ट्रांस फैट्स और हमारे घी में क्या कहानी है? व्हाट इज द डिफरेंस? सो ट्रांस फैट्स, they have, or any poly unsaturated or mono unsaturated fat, they have a double bond, जो कि सैचुरेटेड फैट या देसी घी में नहीं होता. इट्स अ सिंगल बॉन्ड. वो डबल बॉन्ड अगर एक टाइप की कॉन्फ़िगरेशन में है, तो वो हमारी बॉडी उसको आराम से मेटाबोलाइज कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन. अगर वो हीट करने से कॉन्फ़िगरेशन फ्लिप हो गई और वो पूरा उल्टा हो गया, उसका 180 डिग्री बॉन्ड, दैट इज नोन एज ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट फैट. और वो फैट को हमारी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर सकती है. सो नो, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि ये जो हम ट्रांस फैट्स जब हमने ये लिए, हमने लिए किस लिए थे? एडिबल ऑयल. क्योंकि हमें ये बोला जाता है कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं. क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स विच आर एसेंशियल फॉर ह्यूमंस, वो उसके अंदर प्लेंटी में है. ठीक है. लेकिन जब हम उसको ओवर हीट कर देते हैं, या हम बाहर अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपको लगता है कि क्या उसने एक बार तेल डाला और उसने कढ़ाई में रख के और उसने उसको फिर आपके लिए समोसे तले और फिर निकाल के उसने दोबारा एक नया तेल चढ़ाया, फिर उसने उसको यूज किया? नो बडी इज डूइंग दैट. एंड वीड बी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज इफ वी बिलीव कि वो हर बारी मेरे लिए एक नया तेल निकालता है और पुराने वाले को फेंक देता है. बार बार रीहीटिंग, ज्यादा एक्सेस हीटिंग से वो जो तेल वो डाल रहा है, वो ट्रांसफैट में कन्वर्ट हो जाता है. एंड दैट इज वन ऑफ द वेज वेयर प्लाकिंग ऑफ आर्टरीज हैपेंस, और हमारे को हार्ट अटैक आ सकता है. देसी घी वुड नेवर कन्वर्ट इनटू ट्रांस फैट बिकॉज इट इज अ सिंपल, देयर इज नो डबल बॉन्ड इन दैट, सिंगल बॉन्ड है उसके अंदर. तो कौन से फैट्स नहीं खाने चाहिए? Anything which has been manufactured by man should not be had. You can have cold pressed things. And in Yuvam, we prescribe only four types of oils or fats. First is coconut oil, cold pressed. Second is extra light olive oil, which you can use. Third is desi ghee. And fourth is cold pressed mustard oil. So, Sunil sir, please, if you like to add something on it. As far as things are concerned, milk products, we generally now, milk is very good, but is it good for you? That is the question. So once people come to us, they are generally, what all he has said, suffering from lifestyle ailments. So once you are having some lifestyle ailments, having milk and milk in its raw form, which has got a lot of casein protein, and it has got a lot of lactose and and many other things, also certain toxins. So at present and your health state, milk may not be correct for you. So that is why we say, we don't say ki in life do not consume milk. For example, in life, like we also say that we don't consume honey.
But we don't say ki in life don't consume honey, because right now that honey, which is actually a good thing for a lot of other people's, right now is not good for you. That's all. So, yeah, I hope, Shitambri, we've been able to answer it. Yes, thank you so much, Vivek, because actually the doctors are also confusing us and so are the dietitians. So needed a check because there's one dietitian who says, okay, you need to have a lot of milk for your calcium, because at this age, No. in this juncture of life, at the same time, doctor says, milk is not, Okay. it's not going to help at this Yeah, yeah. age. Yeah. I So get we are your totally point. confused. I get your point why it is coming up in that fashion is because people are telling to have milk क्योंकि उसमें कैल्शियम बहुत है. ठीक है, that is one aspect. So leave aside about anything else. तो Okay. कैल्शियम जो है वो कैल्शियम क्या कर रही है, पहले तो कैल्शियम एब्जॉर्ब भी हो रही है. आप पीते रहो दूध और वो एब्जॉर्ब ही ना हो तो उससे क्या होने वाला है. सो और अगर आप कैल्शियम नॉर्मल ले रहे हो, नॉर्मल मान लो मिल्क ले लिया, कैल्शियम सिर्फ मिल्क में नहीं है, बहुत सारी और चीजों में है, और अगर वो एब्जॉर्ब हो रही है तभी तो उसका कोई फायदा है. सो व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज दैट विटामिन डी लेवल्स आर यू नो गॉन डाउन टू द डिचेस. सो none of it is getting absorbed. Liver is not proper, it is as it is not absorbing. So there are so many other things which are creating a hindrance in the absorption of calcium. Having excess milk is not going to solve anything at all. In fact, having even calcium tablets is not going to be solving anything at all. If the only premise is कि आप दूध पियो उसमें बहुत कैल्शियम होता है. सुनील सर. Yeah, absolutely correct. You're saying Dipali's raised her hand for quite some time. Okay, so one Yeah, more. Yeah, Dipali, please. yeah, good morning. Good Three morning. questions for me. One is like I've been Oh my taking God. your plan, you already know that. So, and one problem of mine has been sorted, and that is the constipation problem. So, thanks for that. Thank you. That's Congratulations. good. Second problem is that everybody has started calling me sick because probably I've lost weight. So, and my yeah, I haven't been getting good compliments. And then I have two questions. One is like I recently heard somebody say that consumption of dry fruits is one of the leading causes of cancers. One, this. And the second question is the olive oil which you recommend for use. I've heard that I'm forgetting the name of that particular temperature Yes. beyond which an oil should not be heated. I'm just not getting that temperature. It is said that the olive oil ka temperature is quite low, that particular temperature, and it is not fit for Indian cooking. So I have these two questions, which basically three questions, which I basically need to answer. One is related to the cosmetics, and the other two are related to the facts. Thank you. Okay. Yes. Your first question was as far as dry fruits are concerned. You're Yeah. absolutely correct. Excess dry fruits are very bad for health. We never tell you to have excess dry fruits. In fact, you have if you have too much of peanuts and other dry fruits over a period of time, it will lead to gallstones. This is a thing which has been almost proved by a lot of studies. And And carcinogenic also. That is what I heard. a seed till the time it doesn't interact with water, it does not activate the germination. And till the time the Right. germination is not activated, the amount of nutrients which it is supposed to release, which is right now locked, does not get released. That's why if you have कच्चा dry fruit, मतलब आपने बादाम बस ऐसे ही कच्चे खा लिए, it will go inside, it will interact with the water in your stomach, it will germinate, and Yes. then it will give you energy. But the thing is, more often than not, most of it will get waste because it is not releasing it. Okay. Too much of nuts is causing cancer. Of course, there are studies which indicate, but there is no proper proof of it. There is no 100% proof of it. But we at Okay. Yuvam also, we do not subscribe too much of nuts. Whatever you're saying is correct. But we are not Okay. subscribing too much of nuts. But that doesn't mean you don't have nuts. हमने बोला है सारे नट्स जितने भी होंगे हैंड के अंदर जितने आ सकते हैं, हैंडफुल. You pick up all the nuts, handful जितने आएंगे उतने ही होने चाहिए. Plus, please remember that generally in Indian households, आप एक बार like पूड़ी आपने बना ली, फिर वो ऑयल ना आपको लगता है ये खराब नहीं हुआ, तो फिर उसको रख देते हो छान के, and then you reuse it at least before giving it to the maid one or twice or thrice. Okay, so the concept, once your oil has heated, after that do not use it.
That is more important than thinking about कि किसका smoking point और क्या करना है. The thing is, once you have used an oil for heating or for frying, do not ever use it for anything. Yes, One yes, thing you have to remember this, because yes. most of the times people recycle once or twice, और जब तक कुछ ज्यादा ही काला हो जाता है फिर होता है अच्छा ठीक है अब मेड को दे देते हैं. हाँ, The second time which you have used it, it has become worse than a refined oil also. okay. Yeah. And if people, Deepali, are telling you that you're looking probably thinner or Ugly. sicker, just calculate your BMI. I think you would be requiring to reduce even more. And there is a difference, if I go into, let's say, I was there for one of the meetings, और साथ में there was Yeah. एक beauty patient हो रहा था for the oversized people. Okay. And nobody was like less than, I would say, 100 kgs in that. Okay. So a person like me amongst them was looking like, कि इसको पता नहीं क्या हो गया है, ये तो कहाँ बीमार बंदा को इनके बीच में घूम रहा है. So the point is, it is the context. If people around you are carrying excess weight and they think कि ये सब चलता है, it doesn't happen that way. So you are Okay. an aberration amongst your friends probably now, and you would be going to be even more going forward, because you yourself would find out of place amongst these people, and they will also find you कि अरे यार ये क्या है, ये क्या कर लिया दीपाली. But, we are talking about science out here and nothing else. इतना होना चाहिए. कहीं पे अगर ये लिखा हो कि भाई 100 किलो होना चाहिए, तो आई वुड एग्री विद दैट पर्सन कि हाँ भाई 100 किलो वजन होना चाहिए तेरी हाइट के हिसाब से. और लेकिन ऐसा है नहीं. दैट पर्सन इज हैविंग 10 अदर प्रॉब्लम्स, और अगर नहीं है तो वो हो जाएंगे. Okay. ओके, Pallavi has raised her hand. Thank you. पल्लवी प्लीज. Thank you. I also have another question, Major Vivek. Yes, yes. That is, now that you were discussing about, you means all of us were discussing about dry fruits. So the thing is, if you see a lot of Ayurveda diet, Ayurveda, if you study a lot of Ayurveda and its diet, they say that you should soak the dry fruits and eat, so that, it starts germinating and it becomes alive. Then how are two contradictory, statements floating? Like, I mean to say, नहीं हम भी तो वही बोल रहे हैं कि सोक करो. There is no contradiction. नहीं, अभी उन्होंने बोला ना कि become carcinogenic. नहीं, आप तो सोक करके Dipali had this question, no? लेकिन क्या कंज्यूम किया रात को, जिसको ओवरनाइट सोक करके रखा था, और उसका पानी निकाल के बाकी ड्राई फ्रूट्स को कंज्यूम किया, सो दैट वी गेट बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. अदरवाइज इट इज जस्ट अ एनर्जी का रिक्वायरमेंट. And why are we even saying to have this? Because obviously a lot of vitamins and minerals are there alongside essential fats, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, which is monosaturated and polyunsaturated fats जो हैं वो उनके अंदर बहुत प्लेंटी में होते हैं. तो अगर हमें ये बोला जा रहा है कि हमें एसेंशियल फैट्स चाहिए, तो हमें वो एडिबल ऑयल से लेने हैं, तो हम कह रहे हैं नहीं, आप एडिबल ऑयल के बिना भी ये फैट्स ले सकते हो बाय कंज्यूमिंग नट्स एंड सीड्स. तो विच मीन्स कि आप ये सारी चीजें जो सनफ्लावर, सफोला, पाम ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, इन सब चीजों को आप साइड कर दीजिए. इट इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट ऑल. ये आज से 100 साल पहले कॉटन सीड ऑयल, ये वो दिया जलाने के लिए यूज होता था. आज हम उसको खा रहे हैं. So that is all we are trying to say. The relation between nuts and seeds and fats is only for the fact that polyunsaturated and monounsaturated essential fatty acids are available in those, which any which way we are required to have from outside. So it is a very, very good source to have. Okay. Hello, Vivek, can I ask a question? Yes, please. I like I binge on fruits, lot of fruits the whole day. So Yeah. would that also cause a glucose spike? Obviously, ma'am, for two accounts. Firstly, फ्रूट्स का जो शुगर है उसको फ्रक्टोस नाम दिया गया था. मतलब फ्रक्टोस नाम कहाँ से आया था? वो फ्रूट शुगर से आया था. सो एज अ कॉम्पोजिशन, fruits have more fructose, relatively more fructose than glucose. However, fructose का एक प्रॉब्लम एडिशनल ज्यादा है, बिकॉज fructose cannot be metabolized by any other cell of your body except your liver cells.
तो वो सारा फ्रक्टोज का लोड लिवर के पास ही आना है, और लिवर उसका सिर्फ दो तरीके से इट कैन एक्ट ऑन इट। वन इज ईदर टू कन्वर्ट इट इनटू ग्लाइकोजन, ताकि वो यूज हो सके एट अ लेटर स्टेज, और इट कैन कन्वर्ट इट इनटू फैट। अगर आपका ग्लाइकोजन रिजर्व्स पहले से हैं तो उसको सिर्फ फैट में कन्वर्ट करेगा। सो यू विल बी ईटिंग फ्रूट्स बट यू विल बी अकुमुलेटिंग फैट्स। दैट्स हाउ इट इज। नाउ क्या हमें बिल्कुल फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। कितने खाने चाहिए इज द ओनली क्वेश्चन। तो you should be having probably one fruit a day, not more than that. That's what we even advocate to people. And initially, people who are having lifestyle disorders, we do not prescribe fruits at all for the first 3 months, period. It is possible. Sunil sir. Okay, We thank you. we don't prescribe fruits initially. Fruits, though, actually, since ancient times, fruits have been very, very good. But please understand the lifestyle of the eating lifestyle of the ancient people were completely different than us. How much refined sugar was there for people to have that time, and how much refined sugar or refined carbohydrates or simple carbohydrates are there in our diet today? As far as we are concerned, we are having refined flour, we are having refined sugar. Fruit is very good. Fruit के अंदर जो fructose है, it is very good for people who used to have those ancient kind of diets, where these things which we are having today, processed food, normal food which we are having today, it does not have. So once people come to us, our first 3 months aim is basically to ensure that to reduce oxidative stress and to ensure he gets into metabolic flexibility. Metabolic flexibility means that he should be able to burn fats at the drop of the hat and sugar at the drop of the hat. Now the point is, once you keep on having fructose, at a point when your body, as it is, has got too much of sugar, your glycogen is filled, you are getting insulin resistance. Insulin is playing havoc in your blood and ensuring sugar ko pakad ke it is putting in, shoving it inside your cells, and you are again overloading with a fruit. Ki, okay, an apple a day keeps a doctor away. Let us have a banana. It is good on potassium. Let us have citrus foods. It is good in vitamin C. It will increase our immunity. With the present condition of a eating habit, it is more of a poison. You need to become in a total health condition to start exploiting the benefits of fruits, and not now. Okay, thank you. Thank you so much. Yeah, Pallavi, you wanted to ask? Yeah. Okay. Yeah, my first question is that, are there any side effects of fasting? Number one. Number two, I want to ask that, like for myself, if I talk, I am mostly practicing a good food regime on most days of a month. Yeah. So I have a kind of try to have a low carb diet. I do some mild exercising, for about 45 minutes in a day. And I'm keeping myself away from processed and ultra processed foods. Yet my weight stagnates, as in I am unable to lose weight. But the day I cheat, as in, so that would be as less as maybe 1 or 2 days in a month. I mean, the next day morning, I'm almost, about 500 to 600 grams. I'm weighing more, and it just stays till the time I actually go on a stricter regime. So if I'm having carbohydrates, twice a day, I'll have to leave having carbohydrates once a day. Only then will I be able to get back to, I'll be able to shed those 500 grams or 600 grams that I've put on by 2 days of cheating. And it's going to take another week of going on a stricter regime. So why does this happen? Why is my weight stagnant? And, it only goes up and doesn't go down on, following protocols, and leaving protocols for 2 days will make me fat. So, firstly, we had carried out a session on fasting earlier. It is not yet posted on YouTube. We'll post it even I think as on date. Now, fasting has got immense benefits, such that we are saying that a person who is able to undertake, a 7-day water fast, his chances of getting cancer in future, they reduce by 70%. So what is fasting doing? Fasting is doing 2-3 things. Fasting is ensuring that insulin sensitivity is getting restored in the body. Any which way a person is fasting, if you are sleeping throughout the night, 10 hours, 12 hours, are you eating anything? No, you are not. So any which way, by default, there is a mechanism linked to the circadian rhythm wherein a person is not consuming anything and he's in a state of fast, which we call, जब हम breakfast करते हैं तो हम बोलते हैं we are breaking our fast. So everybody is fasting.
बट द पॉइंट इज कि कितना फास्टिंग को हम क्वालिफाई करेंगे विच स्टार्ट्स गिविंग अस बेनिफिट्स अदरवाइज, इस रूटीन के अलावा, जिसको हम बोल रहे हैं कि वी आर इंड्यूसिंग फास्टिंग नाउ. सो इंड्यूसिंग फास्टिंग वाज अ कॉन्सेप्ट विच वाज ऑलरेडी इनबिल्ट इनटू आवर कल्चर, जिसमें कि पीपल वर ओनली हैविंग 2 मील्स अ डे. वहीं से वो कहावत शुरू हुई थी, 2 वक्त की रोटी या 2 जून की रोटी. दोपहर के बाद तीसरे पहर से पहले was all people were eating. There was no snacking in between. So that was a natural way of living our lives. Now going forward, if we say if I get into a 24-hour water fast, what benefits it would accrue? So it would accrue a lot of benefits. After about 18 hours of fasting, growth hormones production would start to happen in our body. After No, about I understand that, Vivek. What my question is that, like, does it have any side effects? As in, if I go on prolonged fasting, will it also kind of, cause some kind of harm to my body, or is it okay? Because that's not just my question. That is whenever I recommend fasting to people, and if someone goes on it, so that's the question that I get very often. That कभी किसी को कोई problem होती है, किसी को कोई problem होती है. So is okay, it? we have understood your question. Now let us answer it. Now the point is that जो लोग फास्टिंग करना चाह रहे हैं, मान लीजिए if I start कि मैं आज से फास्टिंग करता हूँ, is it good for me? Should be the part of the question which I like to answer. No, it would not be. I have to prepare myself for fasting. Just by thinking about fasting, I should not be fasting. It is going to be creating problems for me because there is deficiencies of lot of minerals, vitamins, ab initio, which this particular fasting would now behave as if it was, I'm putting my body into starvation. So once I have absolute control over the essential nutrients in my body, that is the time I should be undertaking fasting. Why people are not even able to undertake a 24-hour fast? It is because of these very reasons, because the body feels that it is now missing so many nutrients otherwise. Plus also this cycle of insulin and glucagon, which creates a havoc. So, cravings, this kind of a bloating, which probably you're experiencing, is because firstly, you've not been doing it in the manner in which it should have been done, or your body further requires certain vitamins and minerals. Once you are able to attain that level, is the time you'll be able to do fasting bade aaram se. Now, how much? Even if you do a 7-day water fast, it is not going to harm anybody at all. और 7 days में people have this kind of a feeling कि 3 दिन में ही कि उनको चक्कर सा आ रहा है. तो वो चक्कर जो आने वाला जो कहानी होती है, it is not because your glucose levels have gone down. They can never go down because आपके फैट से ही ग्लूकोज बन रहा है through the glycerol, through a process known as gluconeogenesis. Your balance of sugar in your body is going to be maintained always. Till the time you have fat in your body, rest be assured there is going to be enough glucose in your body. लेकिन वो जो चक्कर आता है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द ग्लूकोज कम हो रहा है, इट्स बिकॉज आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है. दैट इज द रीजन फॉर पीपल हैविंग फीलिंग कि अरे मैं तो चक्कर आ गया या मैं फेंट होने वाली हालत लग रही है. इट इज बिकॉज द ब्लड प्रेशर हैज ड्रॉप सडनली, which otherwise also would have not dropped अगर आप you prepare for fasting. So people who undertake our protocols, they go through the entire process where they would be prepared for fasting. We are not telling anybody to fast the day he joins our program कि आप कल से 2 दिन का फास्ट कर लो, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं. हाँ, that person would be doing a 2-day fast with us in these probably this end of or mid of the second month of following the protocols. So it is not going to harm anybody at all. There are immense benefits. To understand those benefits, please, go to the YouTube channel and have a look at the fasting one, which we are going to be posting by today. Sunil sir. Okay, understood. So you need to prepare before you start fasting. Yes. Okay, so my next question was, I'm sorry to be, taking so much time, but my next question was that in spite of having a strict diet regime and doing mild exercising as a part of my everyday regime, I still do not lose weight. My weight stagnates, but on not following that regime, I tend to put on weight, even if I'm doing it for as less as maybe 1 day in a month or 2 days in a month. I tend to put on, and my weight doesn't seem to go down unless I make my regime stricter. So अगर मैंने weight put on कर लिया है और मैं अपने normal routine which is 18-hour fast पे आ जाती हूँ, तो भी मेरा वजन कम नहीं होता है. But अगर मैं 20 hours की fasting करती हूँ, तब मेरा वजन जो है वो वापस जाता है. So going back to my natural weight becomes tougher if I have
kind of cheated for 2 days? Uh, Actually, fasting, whatever you're doing and you're saying you're not reducing weight, there must be many, many reasons for it. It is a very individual question. Firstly, the thing is that ki agar aap fasting karo, you're exercising. One reason may be that because of the way you're exercising or what you're exercising, your basal metabolic rate is not increasing. Fasting actually proper fasting will increase your metabolic rate, but in case it is not increasing, your body is getting into starvation mode and decreasing your metabolism rate because of some deficiency or because of certain aspects or because of low muscle mass, low protein intake during the eating window, or any low intake of any vitamin which you are having, because a person who is doing fasting has to be much more clear about what he's eating during the eating window. First and foremost. Second thing is what kind of exercise are you doing? Because at present, whatever is your body's condition, a mere brisk walk will essentially help you reduce your weight along with intermittent fasting, or you would require certain weight training to increase your muscle mass so that your basal metabolic rate increases, because your fat cells which has got lesser mitochondria will start decreasing, your muscle which has got more mitochondria will start increasing, your metabolic rate will start increasing, whether your thyroid gland, irrespective of whether it is not showing on your blood, whether you have hypothyroidism or not, whether your thyroid gland is not behaving in a way it is supposed to behave to give you adequate metabolic rate. So there are a lot many reasons for it. So it can only be found out by talking to you at length and finding out where you are going wrong in doing the intermittent fasting and exercise regime. And in spite of that, you're not losing weight. Okay, thank you. Yeah, got it. Thank you. Okay. Okay. So anybody else having a question? I really want to say something, Yeah, Shwetamri, and please go ahead. Colonel Sunil. Thank you so much, because I have yet not exactly started on the program, but thank you so much for digging so much deep into it. Like you people really gives me so much of pleasure and a feeling of being in safe hands. You people are studying my case, with so much of dedication, devotion. It's like I'm feeling so important. So thank you so much for that. Really, kudos to you and your team. Well, thank you, Shwetamri. These are, great words coming from you, and you haven't even started the program. So the point is that, we treat everybody in the same Wait, manner, I and also want to say something, Vivek. yeah. So Ruchika here. who is there? Who's calling? Who wants? Ruchika Okay. here. Yeah, Ruchika, please. Hi. I also would like to compliment both of you on many of the things which even I was not aware. Okay. Especially the question which Dipali had put on about having dry fruits, Mhm. right? Badams and kishmish and all. So every day, even I was having, 5 to 6, and then apricot also I was having. So now I have got the information that how much I have to have. Secondly, fruit part, I used to, every day used to have 3 to 4 kinds of fruit. Now I know what I have to have. Like you said, that one fruit is enough a day. So I will go on that now, right? I used to have one banana in the morning, then after having my breakfast, after 1 hour having my breakfast, I used to have papaya, then I used to have my kiwi fruit and an apple also, right? So then, yes, now I'm on the right track since you people are guiding and such great knowledge that we are getting on this issue, fruits and everything, whatever eating habits one should have. That's very commendable, and I hope it will help us too. My question is that how much water intake one should have? Like I have 8 to 10 glasses of water, and sometimes I feel more thirsty and I have more and more. So is it that according to our weight we should have water, or we should have as much as we can? This I want to know, because Okay. sometimes I feel heavy Understood. also after having water, even if I Yeah. have had no food, nothing, and I have water, then also I feel heavy. Okay, So we got a point as far as water intake. Now, the question basically revolves around water intake. And firstly, thank you for your words. And I will just give a
counter question of one thing that we all have read in the internet, social media, in fact, in books and everywhere, people saying 8 to 10 glasses of water every day is a must. Now, Yeah. this yardstick is, if you think about it, is this yardstick true for a person who's there in desert or a person who's living in an AC environment, from an AC bedroom to an AC car to an AC office and coming back? क्या दोनों के लिए requirement same है क्या? First and foremost. So this question leads us to wonder ki how much exactly the water requirement of the body takes. Now you think of mammal. Any mammal doesn't drink 8 to 10 glasses throughout the day. There is a water point in the jungle and they go once in a day to have water and then come back and they don't get dehydrated. Okay, now the means I'm just trying to just tickle certain means thought process. Water, once you drink water more than what your body requires, you tend to go to the bathroom to pass urine. मतलब you have to go and bathroom जाना चाहिए आपको. जो bathroom आप करते हो उसमें pure water नहीं निकलता है. Once you drink an RO water or absolutely filtered water or a mineral water. Generally, people have RO water. But what you go and pass is water which has got all your salts also inside it. Okay. So if you have too much of water in living in an environment when you're not sweating or you're not taking that much of water is not coming out of you, you don't require to have water. A lot of people have आजकल तो there are glasses, electronic glasses which have got timer and आप पानी भरो तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है कि you have to have that much of water. It is actually we find it a kind of foolishness. You have to have water when you feel thirsty. Exactly. Yeah. And you should not feel कि नहीं सवेरे से मैंने पानी नहीं पिया तो let me go and start having water. Your body, but once your body desires water, it will have water. One, there is a there is a specific disease in which there are people who don't want to have water, like some people who don't want to have food. Those things are those OCDs are different. But for a normal person, he should drink when he is thirsty. If he drinks 4 glasses a day, if he drinks 16 glasses a day, it depends upon requirement. When I go for a run of 15 kilometers, once I come back, 8 glass तो मैं उसके 1 घंटे में पी लेता हूँ. But the day I am sitting at home doing nothing, today is a rainy day, I have not gone anywhere, I might have only 4 glasses of water today. It is based on my requirement. Okay. Then Got your point. Thank you. just one more thing with respect to water. Obviously, जब आपको प्यास लगेगी आप पी लीजिए, लेकिन बस वही है कि एक ही चीज ध्यान रखनी है कि कब नहीं पीना है. खाने से आधा घंटा पहले और खाने के आधा घंटा बाद तक नहीं पीना है. That is the only thing Yeah. you need to Yeah. take care of. Otherwise, these are all gimmicks. का कोई scientific reasoning नहीं है. And people are just doing it because उन्होंने कहीं WhatsApp पे या किसी वीडियो देख लिया इन्फ्लुएंसर का कि मैं इतना पानी पीता हूँ. So आप you want to have more water, might as well pick up marathon. आप भागना शुरू करो. आप फिर पानी आपको प्यास भी लगेगी और मजा भी आएगा पीने में. Right. Thank you so much. Thank you. Okay. Anybody else having any question? I have to ask one more question, please. Yeah, please, Deepali, as many as you want. I feel there's an excessive dryness on the lips, and I feel very thirsty most of the times. So is it like anything related to like some physiological problem, or is it like related to the weather? I don't understand. That is a very personal thing, Deepali. I'll do one thing. I'll speak to you because what you're having right now, it is not normal, and it should not happen that you're having dryness in your lips and you're feeling excessive thirsty throughout Right. the day. And even if you have water, मीन्स पानी से पेट तो भर जाता है लेकिन वो प्यास नहीं बुझती. वैसा भी थोड़ा फीलिंग आता होगा बीच में. हाँ जी. हाँ, so there must be some underlying causes to it. I will speak to you separately and we will take care of it. What it is happening, what is the reason. Right now, what I can tell you is that this should not happen. Okay. Okay, so I will speak to you maybe today only. And Okay, thank you so much. Okay, so Is anybody it an else? indication of a bimari? No. There must be something there. Actually, dry lips and other aspects are there. Dry lips जो है और प्यास ज़्यादा लगना जो है, it is more often than not related to certain things, which I will just find out while I am talking to you, because this is a symptom which may lead to 101 things. Like for example, when we talk about headache can happen because of 1,000 diseases.
Okay. This symptom is there in so many diseases. So I'm not saying that you have a disease or anything. I'm just saying I will just find out what is the reason that you are feeling a lot of thirst, and still your lips are getting dry pretty fast. So we will Right, just see it. right. Okay, thank you. Okay, so anybody else before we close the session? Okay, so I think if there are no further questions, then we would close the session now. The only request from people who have attended the session is that, we are trying to spread science. No gimmick. You want to ask us anything, we are here to answer. We want to here to share all these scientific research papers which talk about all these things. We want you to apply common sense to every health issue you have. Now, common sense is not so common, that we all know. But if we take those steps back and start questioning the basic parameters of why things are happening and why you should be having an answer, कोई कुछ भी बोलता है उसको आप सच मान लोगे, then what is the point in having this kind amount of intelligence? Well, the most intelligent species on the planet sometimes behave as if कि उनको शायद है ही नहीं वो intelligence. So question the things which you are being subjected to. Somebody is trying to sell a thing to you. एक some kind of a जड़ी बूटी or some kind of a pill कि अरे ये खाते ही आपका वजन कम हो जाएगा. तो ऐसी पिल आज तक क्यों नहीं बनी, और उसने ही कहां से ढूंढ ली, और अगर ढूंढ ली तो what is the scientific basis of it? Unless and until you verify that, why would you even get into it? You are only getting into it for two reasons. Firstly, you want a solution, but otherwise you want a solution very, very quick. So try and understand there are no such things. It is quick enough. अगर आप 20 साल से वजन लेके घूम रहे थे और आपका 6 महीने में वजन कम हो जाता है, is it not quick enough? Do you want it in 6 hours? Do you want it in 6 days? So those things are not possible. 6 months is a very, very quick time frame. और अगर मान लो वो किसी तरीके से ऐसी पिल अगर आपको कोई डिजाइन भी कर देता है, don't you think that what kind of a havoc it would be creating otherwise? What are the side effects it would be? So you want to fall into a trap, it is entirely up to you. But this is a platform where we are trying to say and give you scientific explanations, simple to understand, logical ones. हमने आज भी बात करा है कि वजन कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज करने से अगर हो सकता तो सबका हो रहा होता, बहुतों का नहीं होता है एक्सरसाइज करने से भी, और वो उससे परेशान है. अब वो परेशान है कि अब तो हम जिम भी नहीं जा सकते, या जिम जा जा के भी अब मेरे पास टाइम नहीं है, या शायद ऐसा ही होता होगा. दे हैव सकम्ड टू दैट थॉट प्रोसेस कि क्योंकि शायद ऐसा ही होता है और मेरे आसपास भी ऐसा ही है तो ऐसा ही होगा, ऊपर वाले ने शायद ऐसे ही बनाया. बट आई गिव यू वन एग्जांपल. इफ यू हैव अ पेट, ठीक है, एंड जनरली पीपल हैव डॉग्स एज पेट्स, आप उस डॉग को स्ट्रीट पे ले जाओ और वो स्ट्रीट डॉग जो है वहां पे आप उसको उसको देखो और अपने डॉग को देखो, या किसी दूसरे के डॉग को देखो जिसके पास पेट है. यू वुड बी अमेज्ड टू फाइंड द डिफरेंस. जिसके पास पेट है उस डॉग से हिला भी नहीं जा रहा है, बड़ी मुश्किल से चल फिर पा रहा है, भगाना पड़ता है उसको, वो खुद भी नहीं भागता. और सामने वाला एक स्ट्रीट डॉग है विच इज मच स्मार्टर, मोर एजाइल, लीनर. तो हमने उस कुत्ते को भी क्या बना दिया, अपने जैसा बना दिया. उसके हमारे ईटिंग हैबिट्स की भी हमने बैंड बजा दी है, उसका लाइफस्टाइल की भी बैंड बजा दी है, उसका ये हाल हो गया. आप उसी को बाहर छोड़ दोगे तो he'll come back to his natural ways. So be more close to nature, be more close to things जिनका एक कॉमन सेंसिकल अप्रोच है, जिनसे आपको लगता है कि हाँ ये चीजें जो हैं दे सिंपल टू अंडरस्टैंड. हमें सिर्फ 2 चेक पॉइंट्स का भी ख्याल रखना है वजन के रिगार्डिंग में, कि हमारा ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन नेचुरली हो हमारे बॉडी में. वो होगा अगर हम इंसुलिन सेंसिटिव होंगे, अगर हम बार बार नहीं खाएंगे. हमारे थायराइड ग्लैंड का हमें ख्याल रखना है, वो बिल्कुल टकाटक काम करना चाहिए. ये 2 चीजें आप अगर कर लो, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो आप बैठे बैठे. एंड आई वाज ऑन अ प्रोटोकॉल 1 year back wherein for 11 months I had not exercised even a bit. Probably my wife has an issue with it कि तुम 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज वॉक करने भी नहीं गए, बट मैं नहीं गया था. And I had put on weight in that 11 months which I was on this protocol, in spite of having everything I was having,
और खूब दबा के खाया है मैंने। मेरा वेट बढ़ा था 3.5 किलो, लेकिन अगर आप में से अगर कोई ये ट्राई करेगा तो शायद हो सकता है कि वो 30 किलो भी बढ़ जाए। सो द पॉइंट इज दैट माई मेटाबॉलिज्म, माई दोनों जो चेक पॉइंट्स हैं, दे आर इन क्लियर, दे गिव मी अ यस आंसर, and I'm able to reduce my weight or maintain my weight in spite of not exercising. Am I saying exercise नहीं करना चाहिए? No. Nobody at Yuvam is saying that. We are telling people to exercise. कब करना है और कौन सी करनी है is what we tell people. In the first month of a protocol, हमारे यहाँ कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है। हम ये बोल रहे हैं कि आपको 3 महीने से वॉक करनी है, आपकी एक्सरसाइज चौथे महीने से स्टार्ट होगी। सो यू हैव टू डिजर्व डूइंग दैट एक्सरसाइज बाय बीइंग हेल्दी इनफ टू डू दैट। इफ यू आर नॉट हेल्दी इनफ और आप एक्सरसाइज और जिम में जाने लग जाओगे, मोर प्रॉब्लम्स वुड बी क्रिएटेड देन वुड बी सॉल्व। एंड दैट इज व्हाट यू आर सीइंग यंगस्टर्स में। क्या हो रहा है, न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाया कि आज कल से बस मैं तो अब जिम जाऊंगा, और वो जिम गया और हार्ट अटैक हो गया। दैट इज व्हाट वी आर ऑल्सो सीइंग, ये हम विटनेस कर रहे हैं। तो वो हमें वो क्वेश्चन पूछने हैं, जो हम जो भी चीज विटनेस कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और उसका आंसर आपको मिलना चाहिए। अगर उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, अगर कोई ये बोल रहा है कि अरे वो यंगस्टर जो एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उनका जो है अचानक दिल जो है जोर से धड़कने लगता है, अचानक ही धड़केगा क्योंकि उसको धड़कना ही है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो आज से 10 साल पहले तो नहीं हो रहा था ये अचानक किसी का, अब क्यों हो रहा है? सो दोज आर दी थिंग्स विच यू नीड टू फाइंड आंसर्स टू। दिस इज अ प्लेटफॉर्म वी आर ट्राइंग टू गिव दोज आंसर्स। प्लीज एनकरेज अदर्स टू कम एंड ज्वाइन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। We'll keep sending you these text messages कि ये अगली बार कब होगा। Every 15 days we have one. We would like to see more faces on this platform. Try and tell others because you have gained some kind of an information today. आपको वो बताओ, you are the brand ambassadors. You will take this message of science forward and tell people to come out of this habit of कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और वो मान लिया। It is not like that. If there is a problem, firstly we need to identify कि क्या क्या problems हैं, और हर एक problem का एक solution है। And I can tell you through conviction and through the research which we have carried out कि पहले तो problem भी बहुत simple है, और उस simple problem का simple solution। So that is where I like to leave it at. And thank you everybody for coming and sparing your time. It is very very difficult on a Sunday क्योंकि सबको सारे काम Sundays को ही करने पड़ते हैं, but you are here, that is really encouraging for us. So I would request everybody to become brand ambassadors, to become health enthusiasts, because it is a guarantee that you can attain total health in approximately 1 year. 1 year, that is all. If you follow Yuvam protocols, you will never ever be having a heart attack or a cancer going forward, जो कि आज बहुत common चीजें हो चुकी हैं. So that is all I have for everybody. Thank you so much for being here, and we'll be closing the session now.